चलो, बच्चे तो कम आए नहीं, कच्छा तो कम आएगा। Take them just like you. Mission accomplished. आई एम नो नाइफ फाइटिंग एक्सपर्ट और कोई वेपन्स में मैंने डिग्री हासिल नहीं करी है, लेकिन आई हैव गॉन थ्रू सम मोमेंट्स एंड सम टेक्निक्स आई पिक्ड अप ऑन दिस मार्शल आर्ट जर्नी, जिसने मेरे को हेल्प किया है टू अंडरस्टैंड वेपन्स और उनके मूवमेंट्स को बेटर अंडरस्टैंड करने में. दे हैव हेल्प मी इन अंडरस्टैंडिंग मूवमेंट्स एंड हाउ टू डील विद वेपन्स in a better way. So I'll be introducing 10 basic strikes and some more movements that can be used for knives, for danda or ye ya karchi, chappal, anything. So without wasting any time, the movement is nothing but you're holding the weapon. Let's start with a knife. Holding the weapon like this. Always the weapon should be as close as possible to your body because you do not want to lose it. अपने अपना वेपन ऐसा नहीं घुमाना है, जितना आपके बॉडी से दूर है उतना ये छूटने का या किसी के आपके हाथ से वेपन छीन लेने का चांसेस बढ़ जाते हैं. इसको पास रखना है, यही हमारी जान बचाता है. अ वेपन इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर लिम्स. जो आप अपने हाथ पैर लात घूसों से नहीं कर सकते, वो ये भाई साहब कर पाएँ तभी इसको उठाएं. A weapon should not be a liability, it should be an asset. आपका वेपन आपके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, उसका वजन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पे उल्टा ज़्यादा भारी पड़ रहा है कि नहीं. So that is what a weapon is, and basically a best weapon according to me for self-defense is a single-handed light-weight weapon. It can be a danda, karchi, chappal, chaku, anything. It is easier understood with a knife. So what I am saying is, the movement is nothing but 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है if you easily understand. It is just हमने X बनाया, पहले ऊपर से नीचे की तरफ X बनाया, फिर नीचे से ऊपर की तरफ X बनाया. So I am saying right top to left bottom, left top to right bottom. Notice how my दूसरा hand, the other hand is always over here, because if something goes wrong, I have my other hand and my legs. Don't completely depend on your weapon. सिर्फ यही है हमें को बचाएगा नहीं. If you have some karate skills and a knife in your hand, of course use the knife, but do not lock your karate somewhere. It should be handy. आपको जो कुछ भी आता है, आपके हाथ में फ़ोन है, वो भी आपके पास ही रहना चाहिए. आप किसी को कॉल कर सको, पुलिस को बता सको. Everything that you know should be there. So your other hand should always be there to protect you. Or you can use some other techniques, parry or something like that. So I was saying X. Oh. Right से नीचे, left से नीचे. And from here it goes from right नीचे से left ऊपर, left नीचे से right ऊपर, and from here it goes in. Simple. अंदर, अंदर कैसे? इधर. I am not teaching crime patrol over here. That is according to your innovation. आप कहीं भी डाल सकते हैं. So it is 1 twist slash thrust, twist slash ऊपर से नीचे and अंदर. So this movement is nothing but 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now the specialty of this is, if you know this, you can use this in most of the weapons. थोड़ा सा बड़ा वाला है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 or 10, right? It can be improvised according to the specific characteristics of the bhaijan. Of course. नहीं, इससे नहीं कर सकते, जस्ट किडिंग। बहुत सारे लोगों को इंपॉर्टेंस पता चल गया है, लेकिन इसको कैसे करना है थोड़ा समझ नहीं आया। सो लेट इट बी डिवाइडेड इन अ क्लॉक, फ्रॉम अ क्लॉक 1 o'clock to 7 o'clock. It goes like this, right? And from there it comes from 11 o'clock to 5 o'clock. So it goes like this. 1 से 7, 11 से 5, 1 to 7, 11 to 5. So this is first two, 1 and 2, 1 and 2. Notice how it is always close to my body. I am not doing this. In a Kalaripayattu video we did, Angatari video, it is a little popular video in our channel. Actually the Kalaripayattu guru is teaching weapons, sword fighting and things like that. He told us, just for drills and purpose of just practicing and demonstrating, we sometimes do Kalaripayattu movements like this. We extend the hand. But in reality, in ancient times when they used to fight with swords and shields, जब आपके हाथ में आपको प्रोटेक्ट करने की वो ढाल भी रहती है, the sword should not extend or your hand should not go outside the shield. The shield and sword goes together. Wherever the sword is going, the shield goes together. मतलब आपकी ढाल और तलवार एक साथ है. कभी भी हम हाथ को अकेला बाहर नहीं निकालते, वो कट जाएगा. Okay, so be safe first. I'm not saying just random do this. Power is not important. What I'm saying is use the elbow. Okay, elbow, use that movement. ज़्यादा over movement नहीं करना है. So 1 and 2. नीचे से देखिए ये कैसे चेंज हुआ. 1, 2. बहुत ज़्यादा पीछे जाके फिर वापस नहीं आना है. आप गिल्ली डंडा नहीं खेल रहे. यहाँ से 1, 2. And as soon as possible twist 3 and 4. The importance of 3 and 4 is, this is very difficult to block. If the other guy is having a weapon, maybe he can block this or maybe he can move back, but this becomes very difficult because it is coming from down. You don't know when it is coming. यहाँ से अगर मैं मारना चाह रहा हूँ, you know मैंने डंडा उठाया, अब कुछ ना कुछ होगा, लेकिन यहाँ से नहीं होगा, आपको पता नहीं चल रहा, राइट? सो इट इज नॉन टेलीग्राफिक, द थर्ड एंड फोर्थ वन, along with the 45-degree movement if you do it. So like 1, 2, 3. It is very difficult to block or defend yourself from an attack like this. So where were we? 1, 2, 3, 4 and 5. Boxing guys know this better than me. You deflect a punch or something like that, and you get in with a body shot or a face punch. The same thing happens with a knife or a weapon. So it is nothing but 1 and 2. Better understood with a knife. 1, you're blocking or parrying something, and 2, right? So this is 5. And after, is this 5? 1, 2, 3, 4. Yes, this is 5. And after 5, you twist and slash. Okay? 7, 8, 9, 10. I hope this is not that difficult. If you just get this movement right and if you can do it in one flow, this is not 1 and 2 and 3 and 4. This is whole one movement. It does not stop. 1, 2. Does not stop. You can add, you can do whatever you like with this. Anything, right? You can add. This is one moment. It should all. Martial arts is like poetry. नहीं, मतलब फ्लो में करो, इतना ही बोलना चाह रहा हूँ. बचा तो नहीं कोई? हाँ, ये सारे करछी चम्मच हमने उठा लिए हैं.
If you like this video, hit the like button, subscribe and press the bell icon. Karate TV online class where we are officially teaching this in the name of karate. Okay, वो भी आपको ज्वाइन करनी है तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. Digital marketing course is offered at 50% off. If you want to know more about that, link is in description. Or if you want to follow me on Instagram, link is in description. If you want to be successful in your life, link is in description. नहीं. और क्या था, कराटे टीवी वाले भैया इसार दूसरा चैनल, उस पर भी थोड़ा सा अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए प्रभु.